Hi everyone, once again welcome to all of you of class 10th in exercise 5.2 mentioned as above on the board. Question number 10 I think clear in the before class, and question number 11 some doubts in this question. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54 terms? Means according to this pattern जो 54th टर्म बन रहा है उस पर 132 मोर देन नंबर ऑफ पैटर्न के बिहाफ पे अगर 132 हम उसमें मोर देन कर देते हैं तो वो टर्म कौन सा होगा? फाइनली अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न 54 टर्म निकाला तो वेरी सिंपली ओके, बट आफ्टर दैट 132 number more than what will be the number of terms according to this pattern. Okay, question number 11 solution. The given series is given AP is 3, 15, 27, 39 and so on. Okay, in this series here A is equal to 3 and common difference T2 minus T1, 15 minus 3 means 12. Okay, and 54th term and 54th term. So according to this series we know that n term of an AP series is an is equal to a plus n minus 1 into d, but according to this series 54th term, so here last term and nth term of this sequence is 54. So putting these values in the formula, an is 54, first term 3, number of terms 54th term 54, here number of terms is 54. Just a minute. Given already n is equal to 54th term, so an is equal to a 54th is equal to a is 3 plus 54 minus 1 and into d is 12. Okay, so 3 plus 54 minus 1, 53 into 12 again 3 plus 12 3 is 36, 6 carry 3, 12 5 is 60, 63 6 36 and plus 3 6 39. So according to this sequence number of 54th term is 639. Understood? And according to question 132 more than its 54th term. Okay, so adding
adding 132 to 54th term of an AP is 639. So 132 plus 639 is equal to what? 9392, 11 1 carry 1, 3 1 4 4 4 4 4 3 7 and 6 1 7, 777. This is the 54th टर्म एंड 132 नंबर उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कंफर्म हो गया 639 हमारा 54th टर्म कहलाएगा, और उसमें जब 132 ऐड कर देंगे तो एक नया नंबर बन जाएगा 771। तो 771 के अकॉर्डिंग ये पैटर्न पे नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ सिचुएटेड होगा ये फाइंड करना है। ओके, सो नाउ an is equal to 771, a is equal to again 3, b is equal to also 12, but how many numbers? Question mark. We know that an is equal to a plus n minus 1 into b. An 771 is equal to a 3 plus n minus 1 find out, and d is 12. 771 subtract minus 3 is equal to n minus 1 multiply by 12, ऐसे ही चलने दीजिए। 771 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 768 डिवाइडेड बाई 12 is equal to n minus 1. Simply 2 6 are 12, 2 3 are 6, carry 1, 2 8 are 16, 2 4 are 8, again 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 2 are 4, and last 3 1 are 3, 3 6 are 18, carry 1, 3 4 are 12. So 64 is equal to n minus 1, then 64 plus 1 is equal to n. Here nth term, ठीक। Question, which term of AP? Okay, so here hence nth term of series is 65 या 65th term, 65th term। ओके, सो n नंबर ऑफ टर्म्स किसको सिचुएटेड करता है? 771। तो इस बिहाफ पे आप आंसर क्या दे सकते हैं कि 771 number will be 65th term according to given series। ओके, ये एक बेसिक ऑपरेशन था क्वेश्चन में, यानी कहने का मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न 54th टर्म गिवन था, उसमें जब 132 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है? 11 टर्म, यानी मोर देन 11 टर्म उसमें ऐड करेंगे तो ये 771 की जो वैल्यू होगी ये आपका 65th टर्म जनरेट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 terms is 100। very simple, 2 APs have the same common difference, D is common, but in 2 APs suppose A1 and B1, A1 and B1 different of 2 series, the difference between their 100 term is 100, like A1 minus B1 is equal to 100। okay, attempt yourself at your home। question number 13, how many 3-digit number are divisible by 7? very simply, 3-digit number, first of all after 100, because 100 is first digit number, first 3-digit number, and
बट कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा फर्स्ट डिजिट? आई थिंक 105. ओके, एंड लास्ट लार्जेस्ट डिजिट नंबर 999. 999 को 7 से डिवाइड करिए, आई थिंक रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर 4 होगा. ओके, उस बिहाफ पे इसको सॉल्व करिए तो लास्ट का नंबर आपको मिल जाएगा. तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस सीरीज बन जाएगी आपकी. फर्स्ट नंबर 105 प्लस 7 ऐड कर देंगे 112. कॉमन डिफरेंस सेम 7 ही रहेगा. फर्स्ट टर्म 105 आ जाएगा. लास्ट टर्म 999 को 7 से डिवाइड करिए. ओके, उस बिहाफ पे एक सीरीज बन जाएगी. हाउ मेनी टर्म्स, आप n निकाल दीजिए. सेम क्वेश्चन 14. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250? तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 1 4, 4 3 4 2 8, 4 3 12. तो 10 के बाद क्या आएगा? 4 3 12, देन 4 16. तो सीरीज आपकी इनिशियल बन चुकी, क्या बन चुकी? 12, 16 डैश 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 अब 250 के बिफोर सोच लीजिए. आई थिंक 250 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर होगा. तो 250 से 2 रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 248. तो एक लास्ट नंबर जनरेट हो जाएगा 248. दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. उस बिहाफ पे आप इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. Solution. Okay. For what value of n are the nth terms of two APs this and this equal? For what value of n? Good. Again, the nth terms of two APs given, the given condition is the nth terms of two APs 63, 65, 67 dash 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 and 3, 10, 17 dash 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 equal are equal. Okay, no problem. If two APs are equal, in this APs first term 63 and common difference 65 minus 63 2, but in this series first term is 3 and common difference 10 minus 3 means 7, but according to question two APs are equal. So apply the formula. Simply apply the formula. A plus n minus 1 because nth term are same and common difference 65 minus 63 means 2 is equal to first term 3 plus n minus 1 and d 10 minus 3 means 7. 63 ट्रांसफर करते हैं minus 3. ओके, and open the bracket also plus 2n minus 2 1s are 2 is equal to 7n minus 7 1s are 7. 63 minus 3 means 60 minus 2 plus 7
is equal to 7n and minus 2n. 60 minus 2, 58 plus 7 is equal to 7n minus 2n, 5n. 58 plus 7, 58 plus 7, 65. 65 is equal to 5, and 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 2 is 15. So here n is equal to 13th term. So what is the meaning of n is equal to 13th term? In this progression, in this sequence, 13th term, वैल्यू ऑफ 13th टर्म आर इक्वल. कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 13th टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 13th टर्म. तो यहाँ का जो 13th टर्म होगा और यहाँ का जो 13th टर्म होगा उसकी वैल्यू कॉमन होगी. ये इसकी मीनिंग होती है. तो आंसर इज in this condition 13th terms is equal. Okay, is equal. Okay, in this exercise I think remaining 5 questions only. Up to 15 questions from my side completed. So resolve and attempt yourself at your home, and from question number 16 to 20 in the next class I will discuss. Okay, then तब तक आप अपने घर में इस बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड अटेम्प्ट करिए. ओके, थैंक यू सो मच.